Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will do pronouns. Let's learn. Look at the picture and read what Soni says about herself and her family. Now this is the picture. My name is Soni. I am a student. Ravi is my brother. He studies in class 5th. Moni is my younger sister. She studies in class 2. I love my parents. They are very loving. We have 5 members in our family. Honey is my pet parrot. It talks too much. I welcome you, Priya, to come and meet Honey. Now see, इस पिक्चर में सोनी अपने बारे में बता रही है, अपने ब्रदर के बारे में बता रही है, अपनी मम्मी के बारे में बता रही है और अपनी पूरी फैमिली के बारे में बता रही है. In this speech, the words I, he, she, they, we, you, it, these all words have been used in place of underlined persons and animals. These words are called pronouns. ये जो सारे words हैं, he, she, they, me, ये किसके लिए यूज किए गए हैं? पर्सन्स के लिए और एनिमल्स के लिए. तो ये क्या है? प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउंस. पर्सनल प्रोनाउंस आर डिवाइडेड इनटू 3 पर्सन. जो पर्सनल प्रोनाउन है वो 3 पर्सन्स में डिवाइडेड है. नंबर 1, फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन, द वर्ड्स दैट रेफर टू द पर्सन स्पीकिंग आर सेड टू बी ऑफ द फर्स्ट पर्सन. दीज आर आई, मी, वी एंड अस. जो फर्स्ट पर्सन में किसको रेफर किया जाता है? जो पर्सन बोल रहा है. और उसमें कौन कौन से आते हैं? आई, मी, वी एंड अस. सेकेंड पर्सन, द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ द पर्सन स्पोकन टू आर सेड टू बी ऑफ द सेकेंड पर्सन. दीज आर यू, दाओ, दाई. जो सेकंड पर्सन में होता है उसमें जो जिस पर्सन से हम बात कर रहे हैं, जैसे इनके लिए जो वर्ड्स हम यूज करेंगे वो क्या करेंगे? यू, दाओ, दाई. तो जिससे हम बात कर रहे हैं वो हमारा सेकंड पर्सन है. और थर्ड पर्सन, द वर्ड्स विच वी यूज इन प्लेस ऑफ द पर्सन और थिंग्स स्पोकन अबाउट आर सेड टू बी ऑफ द थर्ड पर्सन. These are he, him, she, her, they, them and it. जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, हम उनके लिए he का यूज़ कर सकते हैं, him का, she का, her, they, them और it का यूज़ हम कर सकते हैं. The pronouns I, we, you, he, she and they, it are used as subjects. जो pronoun I, we, he, she, they, it हैं, ये हम सब्जेक्ट की तरह से यूज करते हैं. द प्रोनाउंस मी, अस, यू, हिम, हर, देम, इट आर यूज्ड एज ऑब्जेक्ट्स. इनको हम ऑब्जेक्ट की तरह से यूज करते हैं. नाउ यूजेस ऑफ प्रोनाउंस. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू लर्न द यूज ऑफ प्रोनाउंस. एज सब्जेक्ट्स, आई एम अ बॉय, वी आर स्टूडेंट्स, you are my friend, he is Harinder, she is my mother, they are my parents, it is my pet dog Blackie. As objects, my mother loves me very much, our teachers teach us, I love you, I know him for years, I love her very much, I always obey them, I love it very much. Now, gender of pronouns. As nouns, pronouns also have genders. Pronouns के भी genders होते हैं. Masculine gender, feminine gender and common gender. Masculine he, feminine she and common I, we, you, they and it. Number of pronouns. As nouns, pronouns also have singular and plural numbers. इसके भी होते हैं singular और plural. Singular numbers I,
you, he, she, it, and plural pronouns we, you, they. I hope it is clear to you now. It's time to revise. You can revise it.